Hi, welcome back to my channel. This is the third contest that I'm going to record without posting. I haven't posted. मैंने record कर रखी है इससे पहले कि I think एक या दो contest but मैंने post नहीं करा इसको. Let's see if I'm going to post this one or not. ये गलत browser खोल दिया मैंने. This one, right? Codeforces around 1113 div 2 my my old ID जिसमें मैं अभी pupil हूँ. I'll give the contest from this. ये बस कॉन्टेस्ट देने के लिए रख रखा है मैंने. So I'll just give the contest or I'll record that. I don't think I'm going to hold on. Okay, I don't think I'm going to use the उसको क्या बोलते हैं pad thing because I don't know, copy is more comfortable. So actually, you know what, let me use the pad thing. I know copy is more comfortable, but पता कैसे चलेगा, दिखाऊंगा कैसे, मैं दिखाना भी चाहता हूँ ना, my thought process and everything, my thought process. हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है. अब I don't know, I'm not sure कब तक ये बैटरी चलेगी इसकी माइक की, बिकॉज चार्ज नहीं करा मैंने बहुत टाइम से. जो भी, विल सी. एंड वो कहाँ है? देयर इज द पेन स्टाइलस. ठीक है, ओके, विल सी. फिर से गलत टर्न. ब्राउजर, ओके, स्टार्ट. लीड लीड, ओके ओके बड़ी, लेट्स सी. 2.5 घंटे हैं, 6 प्रॉब्लम्स हैं या 7 हैं. 2 3 4 5 6 7 7 है. ठीक है, you delete, I delete, let's see. Alice and Bob were given a binary string s of length and it contains at least one zero and at least one. ठीक है. They each perform exactly one operation in the following order. After the child chooses an operation of 0 and deletes it, then Bob chooses an operation of 1 in the resulting string and deletes it. ठीक है. Alice wants the final string to be lexicographically as large as possible, while Bob wants it to be lexicographically as small as possible. तो Bob चाहेगा कि 0001 हो, Alice चाहेगी 110. ठीक है. Determine the final string if both players play optimally. Are both players greedy? Is that are they going to apply greedy operation? Greedy algorithm? Okay, 101. I am making a project, by the way. मैं वही कर रहा था थोड़ी देर पहले. I'll show you afterwards. अभी मुझे लॉगिन लॉगआउट बनाना है उसमें. मैंने थोड़ा सा एक पेज बनाया, फिर आई वाज लाइक ओके, इससे पहले कि ये और कॉम्प्लेक्स हो जाए, आई जस्ट क्रिएट द लॉगिन लॉगआउट पेज. वो करूंगा मैं इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली. हाँ, लॉगिन लॉगआउट पेज बनाऊंगा, फिर बाकी सारे फीचर्स इंप्लीमेंट करूंगा. 101. एलिस चाहेगा कुछ हटाना. एलिस 1 हटाएगा कि 0 हटाएगा? एलिस 0 हटाएगा बिकॉज एलिस वांट्स इट टू बी लार्ज. ठीक है, ऑफ कोर्स पहले वाला हटाएगा. सो 11 वो आप चाहेगा छोटा तो गया. 110001. देखो, बॉब कोई सा भी हटाए, बॉब पहले वाला हटाए, बॉब दूसरा वाला हटाए, बॉब अगर चाहता है कि जो भी हो तो छोटा होना चाहिए, तो सबसे पहले वाला 1 हटा देगा. एंड एलिस चाहती है, आई मीन स्टार्टिंग से हटाना मेक सेंस. तो पहला 1, पहला 0 1 0 0 1 1. एक है 1 0. एक सेकंड, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी. हाँ, पहला 1 और पहला 0 तो 101. एंड देन पहला 0 पहला 1 तो 00. पहला 0 पहला 1 तो इट्स लाइक 0101. फिर ये बड़ा सा चीज, पहला 0 पहला 1 हटा दो बस, दैट्स इट.
मुझे नहीं पता मैं कितना आ रहा हूँ कैमरे में। D65 बिन सॉल्विंग 1200 के क्वेश्चंस काफी ज्यादा अभी। You know I should make more videos because एक वीडियो में सब कुछ बताना is not doesn't even feel good. Hmm. Uh, count of 0 equals to 0, count 0 equals to 1, and then else s2 dot pushback 0, then else if count of 0 flag ही ले लेता। ठीक है कोई बात नहीं। count of 1 is equal to 1, else s2 dot pushback 1। ये पुराने क्वेश्चंस के करके तुमने क्या गलती से कुछ टाइप कर दिया मैंने। ओ नहीं ईरानी नहीं होने दिया मैंने कमांड, आई थॉट स्लैश कैप, नेवर माइंड। ने वहाँ ठीक है। मुझे बस डर लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगा चार्जेस का। ओके ओके। vg course plus y new tab, if I'm confident that it is going to be correct, let's hope so। ठीक है। will you give me the satisfaction or will you hold me? You'll give me the satisfaction, that's nice। merge to match given to arrays A and B of length n and m respectively, or the implicit are distinct। Oh, okay। 2 into the power 5 will 4 into 10 to the power 5 and 10 to the power, हाँ ठीक है ओके। अलग यूनिक हो सकते हैं। You can perform the following operation on any number of times, possibly 0। Choose two elements of A, अच्छा any number of times you may arrange the elements of A in order to possibly make A B। Okay, this is pretty common। दो एरे दे रखे एक में ऑपरेशन परफॉर्म करके दूसरे के बराबर बना दो। You're given two arrays and B, you're performing, you can perform the following operation on any number of times, choose two elements A with values x and y, x less than equals to y, delete these two elements from A, insert an element, अच्छा बीच का एक दूसरा होगा उसमें, choose two elements of A with the values x and y, ठीक है ओके गॉट इट। ठीक है तो पॉसिबल है कि नहीं ये बताना है। 1 3 है, बी को सॉर्ट कर दो, ए को सॉर्ट कर दो, एंड अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इट कांट बी लेस, ए का साइज कांट बी लेस देन, बिकॉज -1 कर रहे हैं ना, तो जितने भी बराबर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, okay so like जितने भी बराबर नहीं है it has to be that many times greater than that first of all, like n has to be that many times that much greater than m जितने elements a के is not equal to b। और actually नहीं, because दो हट रहे हैं एक आ रहा है।
चीजें हटेंगी, चीजें हटेंगी। ओके सो अगर एक एलिमेंट इक्वल है उसके विल मूव दैट, नहीं नहीं है पॉसिबल इस वाले में तो। हाउ इज इट पॉसिबल है? ओ अच्छा नहीं, एक सेकंड, दो एंड वन, वन एंड थ्री, ओके ठीक है, इसमें पॉसिबल है। वन थ्री टू एन एंड एम आई एम गेसिंग, एंड दिस इज बी, दिस इज बी आई एम गेसिंग। I don't think should be possible. Okay, see, एक एक करके एलिमेंट्स चाहते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाला एलिमेंट कैसे अपन, अगर सेम से मिल गया बहुत अच्छी बात है, हटा दो, जस्ट मूव ऑन, किसी ना किसी को तो सेम होनी है। अगर नहीं मिला, then you just find out the next element that's bigger than that element, and then you remove those. B के एक एलिमेंट करके हम कर सकते हैं ना, and of course like I can do sort of like a binary search or something. In any case, like, excuse me. Uh, B के एक एलिमेंट को लेके मैं देखना चाह रहा हूँ। पहले एलिमेंट को करने के लिए आई मीन ओके, ज्यादा से कितना लगेगा, लाइक left pointer, right pointer, left pointer is constantly gonna go up, right pointer is gonna go right, then मिल गया, फिर it's gonna be like okay से दूसरा वाले से बड़ा ही होगा, तो obviously I'm gonna not gonna go पीछे, right वाला पॉइंटर पीछे नहीं जाएगा because it's gonna be bigger than that, so right में जाएगा, eventually it's gonna run out of it, and मुझे कोई एक मार्क करने का तरीका भी चाहिए, like ये मार्क्ड है, you can't take that again because left pointer प्लस प्लस हो जाएगा, but the thing about right pointer is कि right pointer has to be, once right pointer marks something, I can't take that. So when left pointer comes up to that right pointer, like जहाँ पे वो mark हो चुका है, तो I need a way to visited array कर सकता हूँ मैं? Is it needed? I'm just like क्या पता जरूरत ना पड़े. मैं पड़ेगी visited array की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. Good question. I like this question. And M seeing an M V I A N plus 1 B M plus 1 for int I is equals to 1, I is equals to M I plus plus Vi viz A N plus 1. Okay, now this thing. I is equals to C 1, I is equals to M I plus plus. Now the thing. Int P1 is equals to 1, P2 is equals to N M. So अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो can I do something? Okay, so let's say अगर मुझे हर एक ओके सो लेट्स से बराबर हो गए अब तब भी बहुत सारे एलिमेंट्स बाकी हैं, कुछ बड़े बड़े ही बाकी होंगे, राइट? सो जितने भी बड़े बड़े बाकी हैं, हाँ आई कैन मैनेज दैट, आई कैन मैनेज, बस बी के सारे फुलफिल होने चाहिए, सॉरी बी के सारे फुलफिल होने चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर्स. बड़े पीछे से स्टार्ट हो, आगे से स्टार्ट कर, शुड बी सेम, लाइक कोई ना कोई तरीका एग्जिस्ट करना चाहिए छोटे एलिमेंट्स को बनाने के लिए. एक्सक्यूज मी. P2 is also equals to 1. Now the thing is key int val is equals to b of I.
So now the thing is कि while बट जो एलिमेंट है वो बड़ा है has to be less than equal to, right? Okay, okay. So, so. अगली एलिमेंट जो वो बड़ा है उससे P1 ही अगर बड़ा है तो छोटा मिलेगा ही नहीं ना फिर that's a problem. If A of P1 is greater than val, then that's a problem. Then just break it, you know. See out, no. Now I'm going to assume okay, it's less than equal to val. Another thing is if A of P1 is equals to val, that's great. Just, you know, plus plus. Ways of, I don't know. Ways की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे इस केस में बट स्टिल कर देता हूँ mark P1 is equals to 1 and then P1 plus plus and then if P2 is less than P1 and P2 plus plus. Another thing is continue to the next iteration. Otherwise, final case. जब it is not equal to it is less than that. Okay, so if it is less than that, then I'm gonna while P2 A of P2 while P2 is less than n. While P2 is less than n and actually less than equals to n and A of P2 is less than no greater than less than val. ठीक है तब तक ये चीज satisfied है तब तक we do this thing and once it gets satisfied then okay again अगर वो बढ़ चुका है उससे ज़्यादा like if P2 is equals to n plus 1 then नहीं मिला मुझे एक भी element and just go on and say it's not possible return but अगर मुझे मिल गया so what I'm gonna do is viz of P2 is equals to 1 then P1 plus plus and P2 plus plus. Now what if इस यहीं पे कहीं पे you know it becomes like if P1 is greater than n or P2 is greater than n then just see out because I wonder कहीं पे छोड़ो भाड़ में जाए even even val even blah 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 because I'm like doing plus plus यहाँ पे P1 का और फिर ये भी plus plus हो जाएगा because what if यहाँ पे n plus 1 हो जाए you know what I mean तो n plus 1 यहाँ पे हो जाए तो अगले इटरेशन में अगर जा रहा है अगले इटरेशन में you know तो we are going to oh हाँ by the way um
Okay, got it. ठीक है, P1 greater than n, P2 greater than n. एक चीज है, और एक चीज है कि जब ये लाइक 1 हो जाएगा, सो P1 प्लस प्लस कहाँ पे हो रहा है? P1 प्लस प्लस जहाँ पे भी हो रहा है, मुझे वहाँ पे एक चेक लगाना होगा कि ओके ठीक है, P1 प्लस प्लस अगर कर रहे हैं, हम्म I'll a viz of okay, P1 is less than n, and यहाँ पे ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे while P1 is less than n, less than equal to n, and viz of P1 is equal to 0, equal to 1 actually. अगर ऐसा है तो P1 plus plus, and while I mean एक पॉइंट पे आके P like is gonna be 0, वहाँ पे जाके रुक जाएगा, and there's no way कि like P2 से पहले होगा, because P2 जब भी प्लस प्लस हो रहा है, यूज जब भी हो रहा है, जहाँ पे भी लाइक यूज करके ही हो रहा है, तो दिस थिंग अगर अगर कुछ अभी बड़ा हुआ, कुछ नो 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 नो, और अगर सारे मिल गए उसको, then yes, this should cover all the cases. ठीक है, ठीक है, अगर ग्रेटर नहीं हुआ तो नहीं पॉसिबल है, अगर बराबर हुआ तो यूज कर लो, फिर जिम जा रहे हो? अच्छा ठीक, हाँ ले लो, हाँ ठीक है, P1 प्लस प्लस P2 प्लस प्लस कैसे ऐसा हो सकता? ओके, I'm gonna assume कि ऐसा नहीं होगा कभी भी कि लाइक लेस देन, इनिशियली दोनों बराबर ही है, एक ज़्यादा ही है, अगर बराबर अगर लेस देन हो भी गया तो बराबर लेस देन सीधा बहुत ज़्यादा लेस देन नहीं हो जाएगा, कहीं भी लेस देन होता है, then you just add that, P2 प्लस प्लस दोनों साथ में ही ऐड प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है यार, दिस शुड वर्क. जब things start not acting the right way, I get टेक की चीज लाइक कांट इवन ब्लेम, ऐसा हो सकता है कि इट डजंट वर्क राइट, यू नो व्हाट आई मीन. यस नो, यस नो नो, यस यस नो, यस यस यस, लास्ट के 3 यस रॉन्ग है, थर्ड वाला देखते हैं. ओके, सो दिस थिंग हाउ इज इट नॉट पॉसिबल, मैं अपने मैं उसमें करके देखता हूँ, लास्ट वाले लेते हैं ना, 2 4 1 3 5 6 and then 2 4, 1 and 3 should give me 2, 8 plus plus this 5 is greater than. Okay, I see now. I see. I see. ओके, P2 जितना बड़ा हो सकता है बड़ा हो सकता है, तुम सबका P1 मार्क कर लो क्या, ऐसा ओके, सो लेट्स से कि अगर कोई एग्जैक्टली बराबर है देन जस्ट फकिंग रिमूव दैट, और अगर नहीं है कोई बराबर, व्हाई वुड यू रिमूव दैट, लाइक
why would you not remove that, you know? It's like उसको रिमूव करके तुम क्या खो रहे हो? इधर आप P1 खो रहे हो, P1 उससे लाइक ज्यादा, उसकी जगह क्या यूज करोगे? उससे छोटा और उससे कुछ बड़ा कंबाइन करके यूज कर सकते हो, तो जिस दूसरे के लिए उससे छोटा यूज कर, लाइक रेंज मोर इज ऑलवेज बेटर। वैसे बड़ा जो भी यूज करो तो किसी और के लिए यूज कर सकते हो, लाइक ओके। एक्सक्यूज मी। तो आई डोंट थिंक इट्स एवर गोइंग टू हार्म मी अगर मैं बराबर है तो हटा देता हूँ, तो जो भी बराबर नहीं है कीप दैट। हर एक के लिए P1 मार्क कर लेते हैं, ठीक है? हर एक के लिए P1 मार्क कर लिया मैंने, तो थिंग्स आर मार्क एज P1। अब हम जो है P2 को मार्क करें, राइट? सो हर एक P1 के लिए, okay, P2, if there's like enough P2s, then that's great. Okay, so what we're just saying is like 1 3 5 6 है। 2 के लिए एक छोटा सा मार्क कर लिया, 4 के लिए छोटा मार्क कर लिया ना। उसके लिए आगे जाते हैं। मुझे बस एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो उससे, तो अगर बराबर छोटा बड़ा वही देखते हैं। अगर कोई लाइक बराबर मिल गया मुझे 2 के लिए, कोई ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कुछ मिल गया, लेस ग्रेटर देन इक्वल चाहिए मुझे। ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मिल गया मुझे, then I'll immediately cancel it out, then move on to the greater one, ठीक है? Cancel it out, blah blah blah। लास्ट में जो चीज बचेगी, राइट? लास्ट में जो चीज होगी, इट्स gonna be like what if कुछ बच गया हो, ठीक है? जितने भी बचे हैं उसको किसी भी के साथ कंबाइन करके, बीच का बचा हो तो लाइक अगर कुछ भी बचता है, बीच का कुछ बचता है, तो उसके जस्ट बगल वाले से कंबाइन करके एक एलिमेंट बना दो। एंड का कुछ बचता है, इससे कर कंबाइन, हाँ ठीक है, बचने का इट्स नॉट, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, ठीक है? Okay, so a more simpler solution I have, not JJPI name. D100, 100, D100G, and anyways, RM, VIA, N plus 1, N plus B, N plus 1, Viz array का जरूरत यहाँ भी पड़ेगा, N plus 1। Now the thing is, int I is equals to 1, I is equals to n, plus plus c n a of I, int I is equals to 1, I is equals to m, I plus plus c n b of I। Now the thing is कि ठीक है, सबके लिए मुझे वो चाहिए, राइट? int p1 is equals to 1, now for I is equals to 1, I is equals to m, int val is equals to, is there any way कि मैं ठीक है, मैपिंग कर लेता हूँ मैं। map mpii and नहीं, int pii
I mean, ठीक है, I guess. Actually, you know what, MP करके ही करता हूँ. So val is equals to B of I. Now, while A of P1 is, if A of P1 is greater than val, then जो है, see out, no, turn. Otherwise, if it's less than equal to that, then what you do is MP of val. Oh, you, अच्छा, अबे एक सेकंड, ऐसा कभी होगा ही नहीं, बिकॉज सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो जरूरत भी नहीं मुझे ये चीज सोचने की. Fuck this. अब क्या सोचूं मैं? हाँ, this thing still stands. Okay, so what we have is this. ठीक है, P1 सारे मार्क कर लूंगा मैं. हाँ. um Viz of I is Viz of नहीं, Viz of P1 नहीं, Viz of P1 is equals to sort नहीं किया मैंने, sorry, let me sort it. हाँ, तो like I was worried कि arranging might cause issues. We dot end. ठीक 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 है. Viz P1 is equals to uh if P1 is greater than n, अगर n के बाहर चले गए, then just sorry buddy, you're out of the game. और अगर ऐसा नहीं है तो Viz P is equals to, I don't know, I mark हो चुका है वो, and now just do P1 plus plus. There we go. And P2 is going to be equals to the first खाली element which I find, which is greater than. Now इसमें I can understand plus plus वाली चीज, give me a sec, पानी पी के आता हूँ मैं. Okay, okay. हेलो. हिचकी स्टार्ट हो गई मेरे को अब. ठीक है, so the first element जहाँ पे जब जब तक मुझे कैसे ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता, और अगर if I like go out of bounds, that means ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है. Bleh. Okay, so for int I is equals to please excuse me, man. Please excuse me. I'm really sorry. Am I sorry? See, Ari, like, what can I do about it? I can say excuse me, but कितनी बार excuse me बोला? Like, एक मिनट में मैं 2-3 बार, अगर 5 मिनट में अगर मैं 10 बार, I'm not gonna say excuse me 10 बार. Or am I? Excuse me. Okay, while या को मुझे याद कर रहा है. Who knows? I'm not sorry for that. While P2 is less than P2 is less than क्या? Excuse me, P2 is less than no, while P2 is
less than equals to n, and viz of P2 is less than equal to 1, viz of P2 is equals to is not equal to 0. Wait a second. And viz of viz of P2 is not equal to 0, or viz of or a of P2 is less than excuse me val जब तक ऐसा है तब तक क्या करो P2 प्लस प्लस करते रहो. अगर ओके सो अगर देखो ये अगर ग्रेटर देन हो गया देन वी आर डन फॉर. इसमें से कोई सी भी एक वैल्यू फॉल्स हो गई. नहीं कोई सा भी एक सेकंड दिस इज ट्रू और ओके सो अगर इसमें जीरो वाला आना चाहिए. ठीक है. ओके सो ऐसा हो सकता है कि ये नहीं 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 while not it is less than equals to n and viz of P2 is equals to 0 and a of देखो P वो वाली कंडीशन छोड़ दो. while viz of P2 is not equal to 0 or a of P2 is less than val. जब अगर इन दोनों में से कोई सा भी ट्रू है, अगर लेस देन val तो आगे बढ़ने, अगर लेस देन val नहीं भी है, अगर ये है जो भी है, अगर ऐसा है तो P2 प्लस प्लस एंड P2 लाइक ये दोनों जीरो होंगे तब जाके ये फॉल्स होगा, या तो ये फॉल्स हो जाएगा. P2 is less than equals to n. If P2 is greater than n, then same चीज no return. और अगर ऐसा नहीं है then what you do is कुछ नहीं, simply you just do P2 plus plus P2 plus plus, that's it. तो मिल गया उससे बड़ा do प्लस प्लस एंड हम कभी भी उसके बारे में और नहीं सोचेंगे. हाँ विज भी कर देता हूँ बट आई डोंट थिंक इट्स गोना मैटर. आई यस अबे तेरी ठीक है देख लेता हूँ क्या है. CNMN even starts from this excuse me, अगर it is greater than n then return excuse me, अगर return प्लस प्लस चेक करने से पहले हमेशा देख लो कि बड़ा है कि नहीं. ओ अच्छा ये पहले होगा. सॉरी 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 सॉरी
P2 is less than equals to n ampersand because पहले चेक करेगा वो ये है कि नहीं, फिर देखेगा ना वट अगर ज्यादा है तो चेक करता टाइम उसकी लग जाएगी. yes no yes no yes yes no yes yes ठीक है. था ज्यादा टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं लगना था. जो आसान था. क्यों नहीं, मैं सिंपल सा था मेरे, मैं गलत डायरेक्शन में क्यों, मैं हड़बड़ी करने लगता हूँ ना, तो गलत डायरेक्शन में सोचने लग जाता हूँ. You're given an array A of length to n, excuse me, and there are two integers that get that each occurs exactly twice in A. Okay, so permutation दो times कर दिया, ठीक है. Each integer from 1 to n occurs exactly twice. Initially, so you can repeatedly perform the following operation while A is non-empty. Choose an integer x that is present in A. Maximum possible score after making the array empty, ठीक है. You can repeatedly perform the following operation before while A is non-empty. Choose an integer x that is present in A. देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं हड़बड़ी ना करूँ बिकॉज वो सिंपल सा था, मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी. मैंने क्या सोचा, मैं क्या करने लग गया. मैं आई सॉ इट एंड आई वाज लाइक ठीक है, ऐसे ऐसे होगा वैसे ऐसे होगा, ठीक है, छोटा मिल गया, एक्सक्यूज मी, इमीडिएटली बड़ा देख लो. आई डोंट नो, आई थॉट बट आई थॉट excuse me, you can choose an integer x that is present in A. Let L and R be the indices of the leftmost and rightmost occurrence of x. ठीक है. And the current array, respectively, if x occurs only once, then L equals. But तुमने guarantee दी है मुझे कि each integer from 1 to n occurs exactly twice. Add this, delete the elements from the remaining elements are concatenated without changing the ordinary index starting from 1. Add this thing to your score. R minus L plus 1 or distance का square. Okay. So it's like 1 का is not going to be too much. It's going to be same thing. 4 plus 9 is going to be 1, 2, 3. 3 का square is like 9. And then, okay, 1 का square is like 10. This is going to be 4 and this is going to be what, like 1, 2, 3, 4, 4 का square. Is it better to हमेशा take the biggest one? 1, 2, 3, 4, 16 and then 4, 20. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. It's always 5. No, not all, always. Okay, 2 का square and then 4, 4. नहीं, hold on. 36 कैसे? 4 का square 16 and then हट गया, then it's like 20. 3, 4, 5, 6 का square. अच्छा, हाँ. Biggest one. I'm sorry, biggest one later because I think that is going to be always beneficial because let's say कि यहाँ पे this distance is like x, this distance is like y. अगर मैं y को लेता हूँ then x को कभी नहीं ले पाऊंगा, but it's gonna be y square. But अगर मैं x को लेता हूँ तो x square and then x हटा दो इसमें से, so it's gonna be like right x square plus y minus x का whole square. So I would argue that this is like more than this because I don't know. Do you have any proof that this is going to be more than that? I know y is more than x.
So let's say इनका difference is like suppose I don't know d, so it's going to be x square plus d का square, whatever the difference of them is, and this is straight up y square. Y square is like x x plus difference का whole square. So it's between this and this. So obviously this is greater than that. So जो बड़ा is like all is going to be better than taking a छोटा. और अगर ऐसा है and then you get something in between this, then you can't ever make this a thing, but then you can make it this thing. I don't know, but ये कम हो जाएगा. So सबसे बड़ा वाला उठा लूं अगर मैं, the biggest one possible. But what if biggest one possible के दो तरीके, like this is a thing, this is a thing, and इसको उठा लूं, इसको उठा लूं. अगर वो दोनों क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को, अगर क्रॉस कर रहे हैं, then either one ruins the other one, and then you're left with the whatever, the other thing. So I'm thinking ki what if excuse me, I don't know, you can like order matters, like I don't, इसमें क्यों खोल लिया मैंने, ये क्यों खोल लिया मैंने ये, I don't know, the remaining elements are concatenated without changing their order. So it's like 1 2 3 1 2 3 4 5, and then I don't know, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Either case it's just 3 plus in fact 29, sorry 28, 3 plus 25 is 28. So I don't know, like the biggest one उठा के, वजन उठाने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. सकते हो, तुम दूसरे उठा सकते हो, like you think heap is a solution? Are we sure C is the biggest, the hardest one? Sorry, C is the next hardest one. Okay, I'm sure C is the next hardest one. I don't know. One say I get twice. Distance का square अगर अपन निकाल रहे हैं तो this. पहले वाले का देखो, because पहले वाला is how much distance जो भी है. As I keep going, I can find the next biggest distance. Excuse me, let's keep it in a stack. ठीक है, let's keep it in a stack. Okay. दूसरा वाला जो मुझे मिलेगा distance, if it is greater than that, then what I'm going to do is stack से उठाऊंगा. मैं थोड़ा चल के सोचूंगा, ठीक है. Give me a sec. Okay, you know what? I am getting somewhere, I think. Okay, let me show you. Let me show you something. ठीक है. So what I'm thinking is कि जो भी वो होगा, जो भी let's say array है इस size का, ठीक है. let's say max मैंने पूरा traverse कर लिया. Okay, first of all, let me prove one thing कि अगर ऐसा दो distance same बन रहे हैं,
लाइक तो कंफ्यूजन हो सकता है, ओके कौन सा चूज करूँ, लाइक ये भी यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, कौन सा चूज करूँ, एक चूज करने से ज्यादा फायदा हो सकता है, दूसरे चूज करने से कम फायदा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू दिस, ठीक है। अगर दो अलग अलग है देन वी कैन चूज बोथ, ठीक है। सो दैट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन कौन सा चूज करूँ। और अगर ऐसा है और कौन सा पहले करूँ बाद में करूँ, डज इट इवन मैटर, बिकॉज दिस डज नॉट अफेक्ट दिस। अनदर थिंग इज कि ओके सो अगर दोनों ऐसे इस टाइप के हैं, ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये भी सेम डिस्टेंस है डिस्टेंस डी, ये भी सेम डिस्टेंस है डिस्टेंस डी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा हो सकता है कि ओके बट इफ मैं ये लूं तो मे बी दैट हार्म्स माई फ्यूचर चॉइसेस मोर देन ये लूं, तो ठीक है, लेट मी शो यू दे विल बोथ हार्म इक्वली। जितने भी एलिमेंट्स इसके बीच में है ना, ये तो कॉमन है, बट जितने भी एलिमेंट्स यहाँ है ना, दे हैव टू बी विद इन हेयर, एंड जितने भी एलिमेंट्स यहाँ है दे हैव टू बी विद इन हेयर, दे कांट बी आउटसाइड दिस, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है विच इज आउटसाइड दिस एंड दैट मीन्स यहाँ लाइक ये भी तो सेम डिस्टेंस डी है, दैट मीन्स ये एटलीस्ट डी प्लस वन हो जाएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन डी, तो फिर ये लेना चाहिए ना अपन को फिर, लेकिन अपन ने छांट लिया पूरा एरे इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज द बिगेस्ट डिस्टेंस, सो दैट्स नॉट पॉसिबल कि कोई एलिमेंट यहाँ पर सेम रीजन प्लस फॉर दिस, तो दोनों के लिए सेम इट विल अफेक्ट आवर फ्यूचर चॉइसेस इन द सेम वे, ठीक है। हैविंग सेड दैट, एक और चीज मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ओके लेट्स से मैंने अपन ने ये लिया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये लिया, अब जो एरे छोटा होगा इट्स गोना लाइक जैसे कहना लाइक इंडेक्सिंग री इंडेक्सिंग हो जाएगा ना, इट्स नेवर गोना अफेक्ट लाइक द री इंडेक्सिंग इज नॉट गोना अफेक्ट अस, बिकॉज ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा जिसका काउंटर पार्ट यहाँ पे होगा, बिकॉज अगर वो होता फिर ये एक बड़ा डिस्टेंस बन जाता, फिर अपन इसको लेते, फिर अपन इसको नहीं हटाते इसको हटाते, सो लाइक दैट इसका जो भी काउंटर पार्ट होगा यहाँ पे होगा, इसका जो भी यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका काउंटर पार्ट इधर ही होगा, ठीक है। सो आई कैन सॉर्ट ऑफ लाइक डू डिवाइड एंड कॉन्कर थिंग, ठीक है। जैसे मर्ज सॉर्ट वगैरह में होता है, इतना अगर मुझे पहले पूरा एरे देखूंगा एंड अगर मुझे मिल गया कोई बड़ा बड़ा वाला, मैं उसको हटा दूंगा, देन राइट साइड वाला जाएगा अलग अपने फंक्शन में रिकर्सिवली, ये अलग अपने फंक्शन में जाएगा रिकर्सिवली, सो एन एंड यू ब्रेक इट अप एंड हाफ हाफ, थोड़ा हाफ से छोटा ही हो जाएगा, सो एन लॉग एन। Now to think about is this the best thing, or should I just start implementing it, or is there more observations to be made? I'm thinking I should just start implementing it, okay? Because this is like simpler. This is simple enough. This is simple enough. This is not even brute force, and this is simple enough. And I think C case after this is a decent, simple enough answer. Okay, so I'll just start implementing this. Okay, D65. अब एक इशू हो सकता है कि रिकर्सिवली इट messes it up, because like recursively stack overflow type something blah, let's see ऐसा कुछ हुआ फिर अपन देख लेंगे, ठीक है। ओके 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 alrighty alright, okay PIA n plus 1 I'm still thinking like नहीं पूरा एरे ट्रेवर्स करके पता करना पड़ेगा। Okay, so the thing is, and answer is equals to fun 1 और फिर 1 से लेके n and then a and then this is the answer, and then इसके अंदर recursion चलाएंगे अपन, जहां पे भी recursion हो सकता है वहां stack हो सकता है, is something that people might say, and fun 1 int l int low int high and pi n I'm sorry a, ठीक है। Now the thing is, and
मुझे बार बार लेफ्ट राइट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं लेफ्ट राइट भी इसके अंदर पास कर सकता हूँ। डी आई लेफ्ट n+1 right n+1 for int I is equals to 1 2 into n होगा 2 into n करना था मुझे, my bad। हर जगह पे 2 into n, फिर यहाँ पे भी 2 into n plus if left of a of I equals to 0, then left of a of I is equals to 1 in I because वो position mark कर रहा है, else right of a of I is equals to I। ठीक है, now left right left right intent। अब जो है मैक्स डिस्टेंस मुझे निकालना है, सो excuse me, int max is equals to, I don't know, 1, actually 0, let's do 0। Another thing is for I is equals to low to high plus int leftmost lf is equals to p1 is equals to -1, p2 is equals to -1। One thing is if LO is greater than LI, then return 0। int sum is equals int score is equals, because like score add करें हम, right? Okay, score हमेशा like score 0, ठीक है। If this thing is low is greater than h, if lf is equals to left of a of I and rt is equals to right of a of I. Now the thing is, if leftmost is like less than LO, then P1 is equals to RT, because आया है if P1 is equals to LF and P2 is equals to RT, and if RT is greater than high, then P2 is equals to LF। एक्चुअली नोट जस्ट बराबर करते हैं दोनों को, अगर कोई भी एक दूसरे से ज्यादा है। LF is greater than excuse me, LF is greater than high, like देखो वो आया है, इधर वो लेफ्ट मोस्ट वाला है, इधर अगर लेफ्ट मोस्ट वाला है, that means LF is perfectly fine। RT might be, so RT might be greater than high, so if RT is greater than high or LF
is less than low, in that case, P1 is equals to P2. Great. Now the thing is, if if excuse me, if P1 P2 minus P1 plus 1, right? This thing minus this thing plus 1 is greater than mx, then what we do is RT. Then RT, because P2 is the P1 P2 को छेड़ना नहीं है, P मैक्स हुआ तभी छेड़ेंगे if हम पिछले वाले से बड़ा अगर हो, if mx is less than RT minus LF plus 1, in that case छेड़ना है P2 को, P1 is equals to LF, P2 equals to RF, and mx is equals to RT minus LF plus 1. RT, sorry, not RT. RT is greater than LF less than LF is equals to RT. LF RT, LF is equals to RT, blah 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 blah. ठीक है. अगर ऐसा होता है, ये है ठीक है. Now the thing is, score is equals to score plus is equals to P2 minus P1 plus 1 into P2 minus P1 plus 1. ठीक है. अब जो है फन एक्सक्यूज मी, लो एंड हाई. ठीक है. लो comma P1 minus 1, फिर A, and then left and right, and then N, and then fun 1, P2 plus 1, and then high, comma A, comma left, comma right, comma N. That should do it. कुछ रिटर्न नहीं करेगा ये, जस्ट स्कोर में ऐड कर देगा. ठीक है. तो कुछ ओवरफ्लो या अनलिमिटेड लूप्स टाइप्स ना चले. 6 7 10 16 4 10 16 20 36. अब बस होप कुछ ओवरफ्लो टाइप्स ना हो जाए. आई एम डैम श्योर दिस इज करेक्ट. And with that, ladies and gentlemen, my contest is over. D मेरे से I'm not at that level yet. Don't give me wrong answer for test 2. Run time error. Okay, ठीक है. I kind of get it. वही हुआ जिसका मुझे डर था. कितने लोगों से बन गया? 3000. That's a lot. Okay. Okay, काफी लोगों से बन गया. D might be doable. I know my answer is correct. अब मुझे बस ये देखना है कि मैक टेस्टिंग. हाँ ठीक है. मुझे बस ये देखना है अब कि
यार कितना अच्छा था यार, स्टैक ओवरफ्लो हो गया होगा इनका। कितना प्यारा सोल्यूशन था यार। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं देखते हैं। सोचता हूँ मैं थोड़ा सा इसका एफिशिएंट वे सोचता हूँ, ठीक है। तो लाइक माय डाउट वाज करेक्ट कि इससे बेटर सोल्यूशन है, एग्जिस्ट करता हूँ। हेलो। आई थिंक आई कैन डू इट विद स्टैक। मैं सोच रहा था कि रिकर्जन को स्टैक से कैसे कर सकता हूँ, बट आई कैन stack up the pairs. So stack of pairs. Yes, I don't know if it will work or not. Should work because otherwise question is otherwise my solution looks correct. Should not be any other issue. ठीक है ठीक है ठीक है। सो ये लॉजिक को यहीं रखने देता हूँ। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज स्टैक भूल गया यार मैं। इंसर्ट इंसर्ट टाइप था ना स्टैक पी आई आई एस टी के। आई थिंक आई होप दिस इज इट। एक बार यार दिस डजंट काउंट एज चीटिंग। लेट मी जस्ट सी कैसा था। लेट्स होप मैंने कुछ एम्बैरेसिंग सर्च नहीं कर रखा है। um ठीक है, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज एम्बैरेसिंग हियर, बट लेट मी जस्ट डिलीट इट फॉर गुड मेजर। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स में कितने एन, ज्यादा से ज्यादा स्टैक में एन एलिमेंट्स आएंगे। एंड एन 10 to the power 5 times I understand, 2 10 to the 5 times I understand, maybe stack overflow हो जाए, but a stack itself, like a stack data structure, should be able to hold that many elements. So stack of pairs STL basic function in C++। तेरी जात का। ओ अच्छा, बिकॉज इंटरनेट चलेगा, सो मैं लेट मी कनेक्ट विद माय फोन। There you go. Stack of pairs, state basic functions, यार आई थिंक ऐसे ही होगा। मैं वेट भी क्यों कर रहा हूँ इसका, मेरा प्रेशियस टाइम खा रहा है ये। सो एस टी के डॉट पुश, नहीं, इंसर्ट आई कॉमा 2 into n। नाउ अब यही चीज कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं। D82G and then P। जो भी ठीक है, जो भी। इंट में x इज 0। हाँ, इसको इसके अंदर रखना है। while stk डॉट empty is equals false, empty is equals to false, और not empty or whatever। तब ये पूरी चीज करो।
ठीक है, सो स्कोर प्लस, ठीक है, सो जो भी है ये है, वन वन हटा दो. Another thing is while stack empty is equal to false. Stack dot pop करते हैं क्या? एक function c plus plus stl st के empty, ठीक है. C plus plus st pop dot top, ठीक है. ठीक है, तो बेसिकली इंसर्ट नहीं होता, पुश होता है. And stk dot push if, okay, so the thing is if p1 is greater than or equals to, if p1 minus 1 is greater than equals to l f, नहीं, लो, right, because लो हाई कैसे पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है. सो पी आई आई पेयर वन इज आई डोंट नो, पी आर stk dot top, or this will be low is equals to pr dot ff and high is equals to pr dot ss. And now the thing is, if p1 minus 1 is greater than equal to low, then stk dot push low comma p1 minus 1 if p2 plus 1 is less than equals to high, then stk dot push p2 plus 1 high, यहाँ पे push, ठीक है, ठीक है, should work. I don't know. ओ नहीं, मुझे वो सब चीज़ हटानी है. इतना स्लो क्यों है? Noticing it's a little slow. 6 D 7 G. स्कोर को यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, स्लो है, or maybe computer slow because video recorded or something. I don't know. Wow, wow. Um, low was not declared in this scope between log. Okay, तो मैंने अच्छा int लिखना बाकी रह गया ऐसा. कौन सा उसमें था? 79. Is it fine now? Okay, अब क्या है? लो कहाँ है? कर तो दिया डिफाइन. एक सेकंड, अच्छा कुछ और. पी आर वाज नॉट डिक्लेयर. अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है. वी आई मेन प्लस 79. Is it not PII? Pair of intent. Why do you say PII was not defined?
strange. And with that, ladies and gentlemen, 2026 comes to an पॉप करना भूल गया मैं. I know now. Uh-huh. stk.pop. This should not give runtime error submissions. फिर से runtime error is that time limit exceeded on pretest 2. How the fuck time limit exceeded happens? I don't know. I don't know. हाँ. अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा. अब I can think if it's like okay. पिछला वाला जो अभी करंट मैक्स पेयर है, let's say कोई भी करंट मैक्स पेयर है, and then मैं आगे बढ़ता हूँ and I get a different kind of max pair. So there's no way कि इसके दोनों parts मुझे मिलेंगे. Is that true? Let's say एक यहाँ पे something है and इसके यहाँ तक पहुँचने से पहले मुझे एक अगला मिला. ऐसे अगला is less than that. What in that case what? So I'm not going to consider this first of all, or I might, I don't know. और जो भी है इसके आगे बढ़ जाऊंगा. ठीक है, इसके आगे बढ़ते ही अंदर किसी चीज़ को इज इट इम्पोर्टेंट. इसके आगे बढ़ते जैसे कोई ऐसा मिला विच इज लाइक आई डोंट नो 2 2 3 3 3 बड़ा हिस्सा. अगर कुछ मिल गया इज इट्स पॉसिबल कि यहाँ पर मुझे और बड़ा कुछ मिल जाए. सो आई माइट एट द एंड बी एबल टू टेक दिस. सो मुझे आई डोंट नो देन क्या होगा इसका. आई डोंट नो. given in each integer from occurs exactly once square your score बड़ा वाला लेना है. That I understand. How can this be time limit exceeded? How can this be time limit exceeded? Okay, let me try one thing, which is if अगर like
2n भी इसको संभल जाना चाहिए इससे। 2n टाइम से ज्यादा लूप नहीं चलेगा, फिर क्यों दिक्कत हो रही है इसको? 4 × 10⁵ नहीं चला पा रही है। 2n टाइम्स इंटू फिर n टाइम, अच्छा ठीक है, लाइक ओके यार नो, जो भी। सो अगला वाला जो होगा, मैक्स निकाल लिया मैंने, लेट्स से, ठीक है। या नहीं भी निकाला, हूँ कैसे जाते जा रहा है एज आई गो अलोंग। पीछे का मैं वो देख रहा हूँ, राइट? ओके, लेट्स से कि मैं, मेरे पास है कुछ एंड आई नो कि अब इसके अंदर के आई एम नॉट गोना कंसीडर ऑल, इससे कोई बड़ा मिल गया, अब मुझे पीछे कंसीडर करने चाहिए। अब मुझे जितने मैंने छोड़ दिए हैं अभी तक के, ऐसे हीप है मेरे पास, ऐसे हीप में मैं इंसर्ट करते जा रहा हूँ कि मैक्स डिस्टेंस कितना है अभी, जो अवेलेबल जो भी, एंड उसमें या सेट है, एंड देन अगर कुछ नया मुझे मिला, और मैं उसको सेट में इंसर्ट कर दूँ, नहीं, लाइक जो भी जैसे जैसे बड़े बड़े मिलते जा रहे हैं मैं सेट में इंसर्ट करते जा रहा हूँ, बट बड़े छोटे में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। व्हाट इफ मैं बस सारे पेयर्स इंसर्ट कर दूँ एंड देन लाइक द परफेक्ट पेयरिंग्स का, लाइक इट्स एसेंशियली गोना बी जस्ट लाइक अ नंबर, राइट? 2 है एंड देन आफ्टर दैट कितने सारे आ सकते हैं। ऐसे ऐसे आई नो, राइट से अगर मैं आते जाऊं एंड आई एम लाइक ओके, सो किसी भी एलिमेंट के पहले तक, जैसे एलिमेंट का, वो किसी एलिमेंट, जैसे कोई एलिमेंट है एंड वो उसका लाइक सेकंड ऑकरेंस है, देन आई कैन लाइक कैलकुलेट, ओके इसके राइट में अगर देखें तो व्हाट कुड बी लाइक द आंसर फॉर दिस, at every I can like figure out, okay, what's the answer up till this moment. Okay, I can think in that direction. Give me a second. Give me a sec. Okay, I have one final solution in mind. Time कितना बचा है? ठीक है, आधा घंटा है. It's enough time to implement that. It's a little bit complicated. मुझे अच्छे नहीं लगता है ऐसा करना, but ठीक है. We'll see. थोड़ा मुझे just देखते रहो, मैं क्या करूँ, मैं समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. और ठीक है, ये इतना तक सही है. D74G. नाउ मैं क्या करूँगा, एक दो सेट मेंटेन करूँगा. सेट PII ST1 ST2 और int I comma I equals to 1, I less equals to n plus int lf is equals to left, नहीं, just st1 dot insert left of I and right of I. That's it. Now ST2 में जो है आंसर्स इंसर्ट होंगे, एंड स्कोर रख लेता हूँ मैं एक 0. So while st1 dot in size, नहीं, empty is not equals to true, yeah, just no, not equals to empty. एंड करके मारे, आइटरेटर वाली फालतूगिरी होगी ना, अब मुझे अच्छा नहीं लगता. हाउ टू गेट लास्ट element of a set.
आर बिगिन ठीक है पेयर P1 PR1 जो भी आर बिगिन ST1 डॉट आर बिगिन राइट नहीं यार अब मुझे साइज के हिसाब से रखना है इनको भाग I am storing pairs of left or right in a set. I want to sort it in on it will erase elements as well. Actually, uh, help me write computer function for a vector of pairs that sorts it according to its uh, right minus left plus 1 in ascending. Okay. VPII V1 P dot pushback left of I right of I sorry sort you're saying V नहीं V actually नोट 1 1 वाली फालतू की हटा देता हूँ P dot begin V dot end const pair and A const pair and B return A dot S minus A FF plus 1 less than जो होना चाहिए ठीक है B dot SS minus B dot FF plus 1 ठीक है gotcha अब कुछ नहीं करना बस while B dot empty and SZ is equals to B dot size PII PR equals to V of Z minus 1 ठीक है now ST उसमें तो सेट लेना ही है set PII ST ठीक है now the thing is lower bound वाली चीज right so PII I don't know PR I don't know
ax1 is equals to जो पिछले वाला होगा, so ऐसे आइटरेटर कर लेता हूँ. ऑटो it is equals to what's lower bound on a set if I do it on pairs, then ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, राइट? और इक्वल टू होगा नहीं कभी भी, तो इट्स जस्ट ग्रेटर देन if all elements are unique, lower bound and upper bound work same. हाँ ठीक है, जो भी लोअर बाउंड. सो हाउ डू यूज इट? एस डॉट लोअर बाउंड फिल सी डॉट बाउंड पेयर पेयर give me the element. ठीक है. सो एस टी डॉट लोअर बाउंड फिर पी आर वन डॉट एक्चुअली जस्ट न्यू पी आर वन ही उठा दो सीधा. दिस गिव्स मी will it ever give st dot end? ठीक है. if it dot हाँ हाँ कॉन्टेस्ट खत्म होगा तब तक 10:30. तुम्हें एक और बनाना है क्या? ठीक है, कॉन्टेस्ट खत्म होना फिर. ठीक. if तो it2 tool okay so it's to true. if it1 dot one is not equals to st dot end, then मैं चेक करूंगा कि I do st dot end minus will it give the last element? ठीक है. It's not equal to st dot end, then check if then pair ax1 is equals to 31. if that means उसके बाद वाले में. ठीक है. Only thing is if I ax1 dot ff is less than pr1 dot ss, then okay it's equals to false. t minus my it1 minus minus
it went beyond st dot begin when I do minus minus. If it1 not equals to st dot begin and pair then 1 minus minus. If no, so pair x2 is equals to 2 1, then equals to greater than our ss ss false. अब जो है if okay is true, then score is equals to pr1 dot is equals to pr1 dot ss minus dot ff plus 1 score plus test test कितना टाइम से? अच्छा मिनट, ठीक है. स्क्वायर और फिर st dot insert pr1 else और फिर क्या करना है? else कुछ नहीं करना, फिर बस पॉप कर देना p dot pop back see out course should work. t 76 or 93 6 93 ठीक है. कहाँ error आया होगा? साइज failed, ये इशू आ सकती है सेट्स में. ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है. बी एंड वो साइज माइनस माइनस करना मुझे भूल गया. सेट माइनस माइनस ओके. थोड़ा कम आया है. 16 20 36 25 क्यों आया है इसमें? ओ, क्योंकि पेयरिंग हट गई है तो जितने भी बच्चे हैं वो पेयर्स नहीं है. क्या कॉल से? अब बात है कि इधर वो दो जगह से हट गए हैं या एक अकरेंस बाकी है उसका. कॉल तो हो रहा है, रिंग हो रहा है. ठीक है. सो नाउ द
इशू इज कि क्या वो एक एलिमेंट उसका बचा हुआ है। ये मैं पता कैसे पता कर सकता हूँ? ये मैं लास्ट में जो मेरे पास सेट बचा है ना, उसका सम निकालूंगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एक सम निकाल सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज जो भी है वो ठीक है। इंट ax1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ना मैं डिस्टेंस x1 प्लस टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और लास्ट में स्कोर प्लस इक्वल्स टू 2 × n माइनस ax1 कर सकता हूँ। ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड और सम शिट ऐसा कुछ जो भी 2 - 1 माइनस, ठीक है। दिस शुड बी इट। हाँ, नाउ इट वर्क्स। अगर ये का नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, shouldn't think negative. Okay, I give up. Thank you for watching. हेलो, ठीक है। सो देखा मैंने सोल्यूशन, आई मीन नॉट लिटरली बट मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क्ड कि मेरा सोल्यूशन गलत क्यों था। सो मेरा सोल्यूशन बेसिकली गलत इसलिए था क्योंकि आई वाज लाइक मेरा पूरा होल कॉन्सेप्ट ही गलत था। लाइक जो टीएलई वीएलई आ रहा था ना, दैट वाज जस्ट अ वहम। मुझे लगा रॉन्ग आंसर की जगह टीएलई है, सो इट्स प्रोबब्ली राइट और समथिंग, इट्स नॉट राइट। जो मेरे इनिशियल दो सॉल्यूशंस थे वो भी गलत थे। सो आई वाज थिंकिंग हमेशा मैं बिगेस्ट वाला उठाऊंगा, बट दैट्स नॉट गोना बी एन आंसर। इफ सपोज लाइक ये 5 लेंथ का है और यहाँ पे 4 लेंथ के कुछ हैं, तो 4² + 4² इज इक्वल्स टू 32 एंड 5 का स्क्वायर इज लाइक जस्ट 25। तो ये छूट जा रहा है। लाइक 32 इज ग्रेटर देन 25 प्लस लाइक लेट्स से कितना है, 5 है। एंड लेट्स से यहाँ पे दो दो हैं एंड दो दो हैं, तो लाइक और दो भी अगर बढ़ा दो तो इट्स लाइक 4, दैट्स लाइक 29 इज स्टिल लेस देन 32। तो ये एक ऐसा केस हो गया जिसमें मेरा सोल्यूशन फेल हो रहा था और मैंने सोचा नहीं। और इसका इसका एक्चुअल आंसर इज, मैं आई डोंट नो, मैं हड़बड़ी में नहीं सोचा। आई मीन मोस्ट प्रोबब्ली हड़बड़ी में नहीं सोचा बिकॉज मेरे दिमाग में वो था कि लाइक जल्दी करना है, फटाफट से रेटिंग बढ़ेगी, फटाफट से रैंकिंग अप हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। वेरएज़ अगर मैं थोड़ा लाइक चिल होके कि फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आराम से कर रहा हूँ, सोच के आराम से, यू नो, अच्छे से सोच के कर रहा हूँ, फुल थॉट आउट प्रोसेस फॉलो फॉलो करके, देन लाइक इफ आई स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट रेटिंग एंड एवरीथिंग एंड जस्ट डिड इट फॉर द सेक ऑफ इट, देन मे बी मैं इतनी हड़बड़ी में नहीं सोचता, मे बी मैं सही सोल्यूशन सोच लेता। इसका सोल्यूशन सॉर्ट ऑफ लाइक अ डायनामिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन, व्हिच इज़ लाइक ठीक है। लाइक अगर किसी पोजीशन पे हूँ मैं, इट वुड बी लाइक, ये मैंने लाइक इस डायरेक्शन में मैं जा रहा था। मैं ओके, सो मैंने चैटजीपीटी से पूछा, इट सजेस्टेड मी ओके डायनामिक प्रोग्रामिंग स्लैश ग्रीडी सोल्यूशन है। ग्रीडी तो मैंने अप्लाई कर लिया, तो ऑब्वियसली ग्रीडी नहीं है, डायनामिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन है। एंड देन आई थॉट ऑफ माय लाइक ये पूरा सोल्यूशन मैंने सोचा, बट डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो गया, ये मुझे चैटजीपीटी ने बताया। और मैं कॉन्टेस्ट लाइक आफ्टर आई गिव अप ऑन द कॉन्टेस्ट, तब मैंने ये देखना स्टार्ट किया। तो हाँ, और लाइक ठीक है, मैं थोड़ा हाइपर होके जल्दबाजी में मैं नहीं सोच पाया, जल्दबाजी में मैंने नहीं सोचा। खैर जो भी, आई एम एम्बैरेस्ड ऑफ माय परफॉर्मेंस। लाइक थोड़ा सा काल्मली सोचता तो हो जाता। खैर हाँ, इट्स लाइक अगर किसी पोजीशन पे हूँ, लेट्स से कोई एलिमेंट है लाइक 4 फॉर एग्जांपल, तो इधर मैं, अगर वो पहला ही occurrence है, देन आई जस्ट लाइक डीपी ऑफ i - 1 + 1 इसका, like dp of I is just like answer if we just take 1 to I, answer that is asked in the question if we just take the array from 1 to I। तो अगर ये पहला occurrence है, just like left I is equals to left of a of I। if पहला occurrence है means I is equals to
left of a of I, left stores the leftmost index, right stores the rightmost index, then that means कि हाँ, then that means कि ये पहला occurrence है तो इसका कोई pairing नहीं बन सकता, so answer is just going to be dp of I minus 1 plus 1. और अगर ये नहीं है ये ऐसा तो दैट मीन्स इसका एक पेयरिंग बन सकता है. फिर दो केस हो सकते हैं, या तो वो अपने पेयरिंग के साथ करे, फिर लाइक यहाँ तक का जो डीपी था, डीपी ऑफ दिस, डीपी ऑफ आई ऑफ दिस प्लस इसका स्क्वायर, दैट कुड बी एन आंसर. और मे बी लेट्स से 4 वाला से 3 है ना. ओके ऑब्वियसली अगर मैं ये पार्ट लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ समझाया, देन ये छूट जाएगा, फिर इसको नहीं ले पाऊंगा. और अगर मैं इसको ले रहा हूँ, सो आई एम गोना लाइक डीपी ऑफ आई, लाइक ये वाला डीपी ऑफ आई, दैट मीन्स फिर ये वाला पार्ट में नहीं ले पाऊंगा, बट दैट्स फाइन. ठीक है, डीपी ऑफ आई ये जो भी है प्लस 1, लाइक इन दोनों में से जो भी मैक्स है, क्योंकि इधर मैं ये पूरा लेंथ ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, नहीं ले रहा हूँ, तो फिर इसको लेके फिर यहाँ पे फिर इसके केस में जो भी मैक्स हो, इसका पेयरिंग के साथ मैक्स हो या इसके पिछले वाले के साथ प्लस 1 करके मैक्स हो, जो भी इसकी वैल्यू हो प्लस 1, और फिर इसके साथ कंपेयर करूँ जो भी मैक्स होगा उसकी, डीपी ऑफ आई विल बी दैट्स द सॉल्यूशन. एंड हाँ दैट्स इट. हाँ ठीक है, था नहीं, हार्ड नहीं था, सी कभी हार्ड नहीं होता. सी इज ऑलवेज लाइक थोड़ा धीरे सोचो, मैं थोड़ा हाइपर हो जाता हूँ. मैं लाइक कितनी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें लगा दी मैंने, इतना सोचना भी नहीं था. बट खैर ठीक है, जो भी.